Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 8. This is your English grammar book and the name of your book is English Grammar Plus Skills and Least Workbook. So children, today we are going to do chapter number 10 of your book and the name of the chapter is Determiners. So let's start with the chapter. So what are determiners? So determiners are, it modifies a noun by referring to something specific or something of a particular type. So ये जो determiners होते हैं ये क्या करते हैं? Modify करते हैं noun को और वो क्या करते हैं? वो refer करते हैं किसी एक specific thing को, means एक particular thing को ये specify करते हैं. So this function of the determiner is usually performed by articles. So ये जो काम है determiners का ये mainly articles ही करते हैं. Next is interrogatives, ये करते हैं. Distributives करते हैं. Demonstratives, possessives and quantifiers. So ये सारे जो हैं determiners का work करते हैं. A determiner is followed by a noun. So determiner के बाद हमेशा एक noun मिलेगा. The example is this table, that bird and some coins. Now let's start with the articles. So first point that we are going to learn is articles. So an article is a determiner that informs of a noun. So noun के बारे में ये बताता है. For example, a and an are indefinite articles. So a और an को हम indefinite article कहते हैं. The is the definite article. The जो है definite article है. Indefinite articles a and an. Let's read about them. A and an are indefinite articles and are abbreviated form of the adjective one. So a और an हम हमेशा quantity wise one के साथ ही लगाते हैं. They are used to point out any person or thing. So किसी भी person या फिर thing को ये point out करते हैं. A is used before consonant and an before vowel. So A जो है consonant से पहले लगाते हैं and an is used with vowel sound. For example, a man is standing out and an old man is walking down. So these are the two of the examples of A and an. Now let's come to the next point. Both of the above examples indicate any one man or any one old man. A is used before words beginning with a consonant. So A ऐसे words के साथ use होता है जो consonant के साथ start होते हैं and those vowels that have consonant sound. और उन vowels के साथ भी जिनके अंदर consonant sound आता है. For example, a year, y का year का sound आ रहा है. So that's why a लगाया है. Next is a university. अब university में भी u का sound आ रहा है, means year का sound आ रहा है. So that's why यहाँ पे भी हमने ये नहीं देखा कि university की spelling u से शुरू हो रही है, हमने ये देखा कि कौन सा sound आ रहा है. So we have to focus on the sound, कि कौन सा sound आ रहा है, and that is to be written here. To mean one thing or one person which is counted. So किसी ऐसे के साथ a and लगाते हैं जो one हो और countable हो. For example, a box, a child, a cat, etc. Now to show a kind, class or species. तो किसी kind के बारे में बताना है, किसी class के बारे में बताना है या फिर किसी species के बारे में बताना. So here are the few of the examples. A cheetah is the fastest of all animals. To express a quantity or with certain numbers. A dozen, a little help, a lot of work, etc. So किसी एक quantity या फिर particular certain number के साथ use करते हैं. To show rank, position, profession,
कम्युनिटी एक्सेट्रा. सो रैंक बताना, पोजीशन बताना या फिर प्रोफेशन या फिर कोई कम्युनिटी के बारे में बताने के लिए हम अ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ लॉयर, अ डॉक्टर, अ कांस्टेबल, अ मुस्लिम एक्सेट्रा. नाउ इन एक्सक्लेमेशन बिफोर नाउन. सो किसी भी नाउन के पहले जो एक्सक्लेमेशन है उसमें भी हम यूज करते हैं इसे. फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ प्लीजेंट डे, व्हाट, why a pity, and is used before a mute silent h. So ऐसे words जिसमें h silent है उनके साथ हम and लगाते हैं. For example, an honor, an honest girl, an honorable man. अब यहाँ पे hour नहीं बोलना है, honest नहीं बोलना या फिर honorable नहीं बोलना. Her word we don't have to use. हमें क्या करना है, एच को साइलेंट रखना है. तो आर, ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल. नाउ इट इज यूज्ड बिफोर एन इंडिविजुअल लेटर स्पोकन विथ अ वॉवल साउंड. सो इसे हम किसी एक इंडिविजुअल लेटर के साथ यूज करते हैं जिसे हम वॉवल साउंड के साथ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज एन, एम एल ए, एम का साउंड आ रहा है. So sound of M is coming here. So that's why हम यहाँ पे an लगाया. Next, an is used with words beginning with a vowel and having a vowel sound. So an जो है vowel के साथ यूज किया था और जिसका vowel sound है उसके साथ यूज करते हैं. For example, an orange, an egg, an aunt, an artist. Next. Now look at the note. What it's telling? All words which begin with vowel A and I. So जो भी words जो vowel A और I के साथ यूज होते हैं vowel sound, so we use an. तो ऐसे में हम उनके साथ an यूज करते हैं. Most words which begin with the vowel E. So कई सारे words हैं जो vowel E या फिर O के साथ start होते हैं. Begin with a vowel sound. वो vowel sound के साथ start होते हैं. So we again use an. यहाँ पे भी हम an use करते हैं. Now let's learn about definite article the. तो अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं with a and an. Now let's learn about the definite article the. To refer to something which is already been mentioned. So कोई ऐसी चीज जो पहले से mention हो चुकी है. For example, a girl is standing outside. एक लड़की बाहर खड़ी है. अब we are talking about the same girl. उसी गर्ल की बात हो रही है तो हमने कहा the girl is wearing a red colored dress. So इसीलिए हमने जो second sentence उसमें हमने the लगाया. When a singular noun represents a class. So जब एक singular noun किसी एक particular class के बारे में बता रहा है, means किसी group के बारे में बता रहा है, so वहाँ पे भी हम the use करते हैं. The leopard is a carnivorous animal. Next, before an adjective which is derived from proper noun. So कोई एक ऐसा adjective जो किसी भी एक proper noun से start. To refer to a whole group of people or to show the quality or a class. So ये जो क्या करता है, ये पूरे किसी ग्रुप के बारे में बताता है या फिर किसी की पर्टिकुलर क्वालिटी बताते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास की. The rich, the Indians, the Sikhs, etc. So children, जैसे ही हम ये examples देख रहे हैं तो we are more clear कि ये points क्या कहना चाहते हैं. Before the superlative form of an adjective, आपने देखा होगा superlative degree में भी हम the use करते हैं with before उस adjective से पहले. The best, the greatest, the first, the highest building, etc. To refer to objects we require as unique. So ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो यूनिक हो, जो सिर्फ एक हो, उनके साथ जो यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्टार्स एंड द यूनिवर्स. नाउ इट इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल काउंटेबल नाउन. सो सिंगुलर अगर काउंटेबल नाउन है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दोनों के साथ हम इसे यूज करते हैं. द कैन ऑल्सो बी यूज विथ सम अनकाउंटेबल नाउन. द को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं. The water, the business, the meeting, the station. Now your children fill in the blanks with appropriate
indefinite article. So indefinite article के साथ fill करना है and definite article, और जहाँ पे जरूरी है वहाँ definite भी हमें लगाना है. Wherever necessary. Put across where no article is needed. So cross लगाना है जहाँ पे किसी भी article की जरूरत नहीं है. Bring me half dash dozen mangoes. So अब आप देखोगे जब हम dozen बोलते हैं तो ड का sound है, and ड is a consonant sound. So here we have to write down, bring me half a dozen mangoes. Now the next one is dash banyan tree grows to a huge size. So here we are talking about a particular group. So a banyan tree grows to a huge size. Now children, the rest questions are your homework, you have to do on your own. Now let's come to the B exercise. Read the following sentences. Add or insert an article wherever required or remove where it is not required. So जहाँ article है वहाँ हमें लगाना है और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ हमें नहीं लगाना है. And rewrite the correct sentence. Sentence को correctly हमें लिखना है. Never tell lie. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Never tell a lie. So tell और lie के बीच में आएगा Always speak truth. अब यहाँ पे speak और truth के बीच में आएगा always speak the truth. Always speak the truth. So these are the two questions that we have done, children, and the rest are your homework. You have to do on your own. Now let's learn about demonstratives. जो demonstrate करते हैं, आपने पढ़ा होगा demonstrative adjectives. Demonstrative word आपने बहुत बार सुना है. And you also know what is demonstrative. This, that, these, those. So इन 4 words का use कहीं भी हो रहा है means ये demonstrate कर रहा है. So demonstrative determinants are followed by a noun and shows which person or thing is being referred. तो एक noun को follow करता है और बताता है कौन सा person या फिर thing यहाँ पे उसकी बात हो रही है. So this, that, these and those are some demonstrative determinants. So ये कुछ demonstrative determinants हैं and it differs according to the distance. ये distance के according ही differ करते हैं. Near or far and the number singular or plural. This and these are plural. This and these जो हम plural के साथ use करते हैं and it indicates something near. So ये जो बताते हैं कोई चीज जो पास में. Now that and those ये हम use करते हैं plural. Those यहाँ पे plural के लिए है and that is used for singular and इन दोनों का meaning होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा दूर है. Here the example is these apples are good and Ria will take those papers with her. Now we can use this and that before uncountable nouns as well as countable nouns. So this and that जो हम uncountable noun के साथ भी use कर सकते हैं और countable noun के साथ भी use कर सकते हैं. For example, that mango is rotten. Mango सड़ा हुआ है. Who has spilled this milk? Milk किसने गिराया है? Now children, let's complete the exercise. Complete the following sentences by filling in the blanks with suitable demonstratives. So look at that dash girl. So look at that girl. Now the next one is dash kind of cruelty is unbearable. So this kind of cruelty is unbearable. So these are the 2 of the questions that we have done. The rest is your homework, you have to do on your own. Now let's come to possessive. You also know what are possessive. Possessive means when something tells about the belonging of a person or thing. So किसी के belonging के बारे में बताते हैं possessives. So possessive determinants are followed by a noun. So हमेशा noun से follow करते हैं, noun को follow करते हैं. They can also be used with countable as well as uncountable noun. So इन्हें हम countable और uncountable noun दोनों के साथ ही use करते हैं. My, your, our, their, his, hers,
etc. are some possessive determinants. So ये जो है यहाँ पे कुछ जो determinants दिए गए हैं possessive determinants हैं जो possession बताते हैं. So for example here the example is this is my bag. My is a determiner followed by the noun bag. So my जो है determiner है जिसको हमने bag के लिए लिखा है. These are their cricket bags. So अब यहाँ पे their जो हमारा determiner है जो हमने यूज किया है for cricket bats. Now fill in the blanks with the correct possessive. So here children we have to fill in the blanks with correct possessives. Priya is this dash pen. So Priya से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्रिया से क्या पूछा हमने? प्रिया इज दिस योर पेन. नेक्स्ट रोहन इज डूइंग डैश होमवर्क. सो रोहन इज डूइंग किसका होमवर्क कर रहा है? हिज होमवर्क. सो ही इज डूइंग हिज होमवर्क. नाउ लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं? सो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स are used to refer to a group of people or things. So एक group of people या फिर thing के बारे में बताते हैं. They also refer to individuals within a group. So किसी individual के बारे में बताते हैं जो group के अंदर है. Each, every, either, both and neither are some distributive determinants. So यहाँ पे जो कुछ determinants लिखे हैं, these are the distributive determinants. Examples are neither, answer is correct. So neither is the determiner that we are using here. Next is every child needs love and care. So here every is the word and it's the adjective that we are using here. Next is quantifiers. So quantifiers are words. Quantifiers are words or phrases which are used before nouns to indicate an amount or quantity. So quantifier की जो spelling है उसमें भी हमें quantity word समझ में आ रहा है. ये quantity को बताते हैं. So quantifiers are words or phrases which are used before noun. Noun से पहले use करते हैं to indicate an amount of or a quantity. किसी amount या फिर quantity को ये बताते हैं. There are three main types of quantifiers. So तीन तरीके के quantifiers हैं. क्या क्या हैं? First is quantifiers are used with countable nouns. So quantifiers को हम countable noun के साथ use करते हैं, means जिन्हें हम count कर सकते हैं. Please give some coins for charity. सब coins को हम count कर सकते हैं तो हमने लिखा है some. I have only a few minutes. Minutes को भी हम count कर सकते हैं. To spare, and there are many titles from which you may choose. So titles को भी हम count कर सकते हैं जिसमें से हम choose कर रहे हैं. So before all these we have used the adverbs here. Now the next point is quantifiers are used with uncountable noun. अब countable के साथ तो use कर सकते हैं but इन्हें हम uncountable के साथ भी use कर सकते हैं. So there is not much milk left. अब मिल्क जो है is uncountable, उसके साथ यूज किया है. There was little money in the house, so money is uncountable. And I bought lots of sugar, so sugar is also uncountable. Now the third point is quantifiers that can be used with both countable and uncountable nouns. So कई ऐसे quantifiers हैं जो दोनों के साथ यूज हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो हमने पढ़े ये काउंटेबल के साथ यूज होते हैं. यहाँ जो हमने पढ़े ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्वांटिफायर्स दैट गोज विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सो हियर द एग्जांपल्स आर गिवन चिल्ड्रन. Could I have some butter please? So here some is the quantifier that we are using with butter. Butter is uncountable. There is plenty of water in the lake. Water is uncountable. And Megha took a lot of photographs. Photographs को हम गिन सकते हैं, so it's countable here.
when she visited the Tower of London. So some more quantifiers that can be used with both countable and uncountable nouns are, so countable uncountable के साथ जो भी quantifiers हम use कर सकते हैं, few more are given here. So ये थे जो हम दोनों के साथ use करते हैं, इनके अलावा भी कुछ यहाँ पे नीचे दिए गए. Now here children we have to fill in the blanks with the appropriate distributives. The train leaves dash 4 hours. तो 4 घंटे में ट्रेन निकल रही है. So what we are going to write here? The train leaves every 4 hours. Next is Eva and Julia dash are my students. So यहाँ दो बच्चों की बात हो रही है, Eva and Julia. वो दोनों ही क्या है? मेरे स्टूडेंट्स हैं. So मैंने यहाँ पे लिखा both are my students. So like this children, you have to complete the rest of the exercise. Now fill in the blanks by choosing the correct quantifiers. So here we have to choose the quantifiers, and the first one is we are going to be late. There is dash traffic. Traffic is countable or uncountable? It's uncountable. So क्या आएगा? Much or many? So there is much traffic. Next, the dash of people driving is credible. So the number of people driving is credible, or the amount of people driving is credible. So here the number of people driving is credible. Now let's learn the next topic, and that is interrogatives. So interrogative determiners are used for asking questions. So as you know, with the name interrogative नाम को सुनते ही हमें पता चला कि ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. So these determiners are used for asking question. क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं. These are used before noun. ये noun से पहले यूज किए जाते हैं. And what, which, how, much, how many, and whose. So ये सारे जो है कुछ interrogatives हैं. And the examples are here. What kind of clothes do you like to wear? Whose dog is barking in the middle of the night? So these are a few of the examples. Now quickly, let's come to fill in the blanks with suitable interrogatives. So here children, the first one is dash did you invite to preside over the meeting? So the answer is whom did you invite to preside over the meeting? Now she asked dash do I prefer tea or coffee? So here what we are going to write? She asked what do I prefer, tea or coffee? So children, we have done the two of the questions, and the rest you have to do on your own. Now let's come to let's do more. Let's do more pattern. Check the sentence that are correct and rewrite the ones that are incorrect in your notebook. So यहाँ पे हमें sentence को check करना है जो correct है, और जिन correct उन्हें हमें जो है अपनी notebook में लिखना है. Now children learn easily what they see. So this is correct, and the sugar has lots of calories. So this is also correct. Now like this children, you have to complete the rest of the exercise. So with this we have completed this chapter of determiners, and I hope that you have learned the different kinds of determiners that we have read here. So you have to complete the exercises that is given to you as a homework, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay.